क्या आप अपनी ट्रेडिंग के लिए एक रिलायबल सपोर्टिव टूल को ढूंढ रहे हैं जिससे आपकी ट्रेडिंग प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस बढ़ सकते हैं? आर यू लुकिंग फॉर अ टूल विच कैन इंक्रीज योर odds of winning in the stock market? And if yes, then I have brought in the Fibonacci retracement trading strategy for you to increase your odds in the stock market of winning, right? So in this video, we are going to discuss about the Fibonacci trading strategy, or we are going to cover the three parts. One part is the introduction, the second one is how to draw the Fibonacci levels, and the third one is how to use them. Alright, are you all ready for a bang? Yes, so let's see. The first is introductory part, and if you have a question in your mind like why we use this Fibonacci retracement, I mean why shouldn't we use any other tool like Fibonacci? देखिए Fibonacci की जो खोज की थी, डिस्कवरी की थी, it was done by a gentleman Leonardo Pisano from Pisa, और बाद में उनको लियोनार्डो फिबोनाची कहा गया, और उन्होंने अपनी बुक लीबर अबाकी, बहुत फेमस बुक थी, उसमें उन्होंने फिबोनाची नंबर्स के बारे में बताया कि कैसे उन्होंने जो ऑब्जर्वेशन बताई कि प्रकृति में हर एक चीज जो है वो फिबोनाची सीक्वेंस में है. जैसे फॉर एग्जांपल जो पेटल्स होते हैं, फ्लावर के पेटल्स होते हैं, दे आर इन द फिबोनाची सीरीज, दे आर इन द फिबोनाची नंबर्स. पाइनएप्पल आप सभी ने देखा होगा, पाइनएप्पल के जो पाइन कोन्स होते हैं, दे आर इन द फिबोनाची नंबर्स. फॉर एग्जांपल आपने सनफ्लावर देखा हो, सनफ्लावर्स की जो अरेंजमेंट रहती है बीजों की, सीड्स की, दे आर इन द फिबोनाची सीक्वेंस. अगर हम यूनिवर्स में देखें तो गैलेक्सीज जो होती है वो फिबोनाची सीक्वेंस में होती है. अब हमारी उंगली की ये जो बोन का अरेंजमेंट है, दिस इज ऑल्सो इन द फिबोनाची सीरीज. आंख, नाक और फेस का जो अरेंजमेंट है ह्यूमन बॉडी में, that is also in the Fibonacci number. For example, हमने whale देखा हो अगर आपने, तो whale की जो बॉडी होती है from top to bottom, it is also in the Fibonacci numbers. तो फिबोनाची को जो बहुत पावरफुल और बहुत रिलायबल बनाता है, वो ये बात बनाती है कि फिबोनाची इज ड्रॉन फ्रॉम द नेचर और इट इज ड्रॉन फ्रॉम द यूनिवर्स. तो जब स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग की बात आई तो एक नई चीज जो टूल यूज किया गया उसको कहा गया फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स. सो इट इज बेसिकली रिट्रेसमेंट लेवल्स. जैसे कि यू कैन सी हियर आई हैव पुट इन सम इम्पोर्टेंट लेवल्स हियर, लाइक 38.2% is the Fibonacci retracement level, 50% is the Fibonacci retracement level, 61.8% is the Fibonacci retracement level. कई जगह और भी लेवल्स को यूज करते हैं, लाइक 23.6 और 78.2, दे आर ऑल्सो द फिबोनाची नंबर्स, फिबोनाची लेवल्स, रिट्रेसमेंट लेवल्स. नाउ these levels, they act like an important support or resistance to the price. So these levels are very very important when they act like a support, when they act like a resistance in the market. So basically one thing which I would like to add here is that nothing in the stock market is a single line. So it is always an area, it is always a zone in the market, right? So whenever you go and use the Fibonacci, either retracement levels or Fibonacci extensions or Fibonacci arcs, have some conviction in your mind, because this is something which is drawn from the nature, which is drawn from the universe. Correct? Let's jump into the next segment, then that how you can draw it. Like you can see here, this is a chart of State Bank of India, and if you see here, like you need any one move to draw Fibonacci. हमको एक पूरी मूव चाहिए फिबोनाची का रिट्रेसमेंट ड्रॉ करने के लिए. फॉर एग्जांपल कोई चीज अगर ए से बी पॉइंट तक जाती है तो दिस इज अ लेवल क्रिएटेड, दिस इज अ पाथ क्रिएटेड. व्हेन दिस थिंग और दिस ऑब्जेक्ट विल कम बैक फ्रॉम बी टू ए, इट विल रिट्रेस द पाथ. तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स, दे आर ड्रॉन फ्रॉम द रिट्रेसमेंट. नाउ for any sort of retracement, you need first a path to get retraced. So here
Before you look for drawing the Fibonacci, you need 2 points. Point A, like in this case, ये State Bank of India का daily chart है. This is your point A here, and this is your point B here in State Bank of India. तो daily chart पे अगर हम देखें तो यहाँ से मतलब 4:30 से लेके for example 6:30 तक State Bank of India ने एक पूरी move दी है. This is a 200 points move in the State Bank of India. Now it retraced up the path, and it retraced almost 61.8% of the entire path. Can you see this 61.8% zone? And here you got retraced, right? तो पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 4:30 से 6:30 तक गई, फिर उसने 6:30 से लेके से रिट्रेस हुई, मतलब करेक्शन दी 506 रुपए तक, 506 तक. देन इट रिज्यूम्ड द अप ट्रेंड. तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट कि पहले आपको 2 पॉइंट्स चाहिए टू ड्रॉ अ लेवल. लाइक नाउ आई विल शो यू द सेटिंग्स पार्ट. सो लेट मी just exit the full screen mode here. Now you see this is my FIRES account, same as the trading view interface. Yes, अब अगर आप यहाँ पे देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपके सामने लगा हुआ है. फॉर एग्जाम्पल आई फिगर्ड आउट, दिस इज ऑन द डेली चार्ट. अब आपको ये रिट्रेसमेंट, फॉर एग्जाम्पल आई एम अप्लाइंग एज एन इन्वेस्टर, आई कैन एनालाइज द डेली चार्ट, और फॉर सम स्विंग ट्रेडिंग ऑल्सो आई कैन डू दैट. तो मैंने यहाँ पे देखा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 4:30 का एक लो बनाई थी और 4:30 के लो से 6:30 के हाई तक गई है. नाउ आई गॉट दिस पाथ इन द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दिस मूव. नाउ आई वुड लाइक टू सी कि ये अभी कितना रिट्रेस किया है, इसने इस पूरी मूव का कितना रिट्रेसमेंट हुआ है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में. नाउ आई वुड लाइक टू mention one thing here, that 61.8% is also known as golden ratio in the market, or golden Fibonacci level in the market. Now what I will do, I will put now A to B, for example. Yeah, please understood it clearly. मान लीजिए ये आपका A point था, for let me just make it a 24 and yeah, bold. This was your point A and this is your point B, right? अब आपको जब भी आपको रिट्रेसमेंट ड्रॉ करनी है, इफ a stock goes from A to B, your retracement should be drawn from B to A. ठीक बात है. अब मैंने क्या किया, मैंने क्लिक किया रिट्रेसमेंट लेवल पे. इस पे अगर आपको सेटिंग करनी है तो आई विल शो यू सम सेटिंग्स आल्सो. आई विल स्टार्ट द मैग्नेट मोड सो दैट इट ऑटोमेटिकली कैप्चर्स द हाई एंड लो. नाउ आई पुट इट हियर एट द बी पॉइंट. दिस गिव मी अ सेकंड. So I'll put it here at the B point and I'll pull it down and will leave to the A point. I'll click on A point and will leave it. Now this is your retracement. अब अगर 630 से लेके 553 तक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जब आई, it did a 38.2% correction. When it fallen till 530, it did a 50% correction. When it fallen till 61.8, it did a 61.8% retracement, which is the golden retracement level also. ठीक है. So you need to look at the basic setting. You just click on it, right? Just click on it and you just do a simple setting. आप उसमें अपनी पसंद का कोई भी color choose कर सकते. Like I chosen blue color here. You don't need extended left lines. Yes, extended right is what is needed. Like 23.6% is also there. 78.6% is also there. We only if you want, you can click to them also and click on OK. These are all the Fibonacci levels. 23.6, 38.2, 50%, 61.8. This is 78.6 and then the 100% retracement level. And in particular, 61.8 is known as golden Fibonacci retracement. This is how you can do it on the daily chart. मान लीजिए मैं अगर swing trader हूँ या
शॉर्ट टर्म ट्रेडर हूँ और मुझे देखना है शॉर्ट टर्म मूव्स को आइडेंटिफाई करके वहां पे रिट्रेसमेंट को यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज वन मूव, मान लीजिए ये एक मूव आई थी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 60 मिनट चार्ट है एंड इनटू दिस मूव वाज फ्रॉम दिस लेवल 501 रुपए से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चलना शुरू हुई 588 तक। Now then I saw okay it started correcting, तो I want to figure out कि ये जो मूव आई थी इसका ये कितने परसेंट करेक्शन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आया है। तो I'll just remove drawings, I'll click on retracement, I'll start the magnet mode, click here, yes यहाँ पे हमने क्लिक किया from B point and I'll pull it down to the A point और A point के लो पे आके मैंने इसको छोड़ दिया। How much it is? या जस्ट टाइप इन द चैट बॉक्स कितने परसेंट करेक्शन किया। इट करेक्टेड 23.6% ऑफ द एंटायर मूव एंड देन इट अगेन स्टार्टेड मूविंग अप। दिस इज व्हेन यू कैन फाइंड द बॉटम इन द स्टॉक। फॉर एग्जाम्पल आई एम अ डे ट्रेडर एंड आई एम लुकिंग फॉर ओनली इंट्राडे ट्रेड्स। आई गो टू 5 मिनट चार्ट, राइट, 5 मिनट का चार्ट है। Just the condition is that you should find the one move जिसका आप retracement देख रहे हैं मार्केट में। For example, if you just look at it, एक ये move आई थी इसका correction। So for example, I go to a 15 minute chart. This was the same move, so not much needed. 5 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। 5 मिनट के चार्ट पे अगर हम देखें तो इस दिन की अगर बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस पर्टिकुलर डे, अब इस दिन क्या हुआ कि पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया गिर रही थी, फिर ऊपर गई, फिर इसने करेक्शन दिया। अब यहाँ पे ट्रेडर्स को फील होने लगता है कि कहीं हम वापस तो नहीं गिरेंगे, क्योंकि ऐसा उस टाइम पे लगता है कि कहीं ये डाउन ट्रेंड का रिजम्पशन तो नहीं है। देन यू नीड टू टेक हेल्प ऑफ फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स। नाउ इफ आई ड्रॉ हियर फ्रॉम हियर टू हियर, कितने परसेंट रिट्रेसमेंट आई, यू कैन सी इट ऑलमोस्ट करेक्टेड टिल 50%। यहाँ पे आप देख सकते हैं 50 और 61.8 के बीच में है और इस लेवल से इस यहाँ से फिर ऊपर जाना शुरू हुआ करेक्शन, देन अगेन एंड इट अगेन वाज बैक टू द टॉप। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट ओके दिस इज द रिट्रेसमेंट लेवल, यहाँ तक का करेक्शन अलाउड है। नाउ द जनरल थ्योरी इज कि 61.8% तक की जो करेक्शन है, अगर आप ट्रेंड की बात करें तो अगर 61.8% तक की करेक्शन को स्टॉक होल्ड करता है देन इट इज एक्सपेक्टेड टू रिज्यूम द ट्रेंड। और अगर ये डाउन ट्रेंड है और 61.8% तक का पुल बैक अलाउड है, देन यू कैन एक्सपेक्ट द कंटिन्यूएशन ऑफ डाउन ट्रेंड। अगर 61.8% वायलेट होता है आइदर ऑन द अप ट्रेंड और ऑन द डाउन ट्रेंड, देन यू कैन एक्सपेक्ट अ पॉसिबल रिवर्सल इन द मार्केट। Yes, so is the drawing part clear to all of you? I want all of you to draw at least 100 times retracement so that it becomes a very it becomes nothing, just you can do any time on any chart, right? The third part is how to use it. हमेशा याद रखिएगा कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स को कभी भी अकेले यूज मत कीजिए, या yes, use them as a supportive tool, use them with moving averages, use them with central pivot range CPR or any other setup, but you can use them along with your setup. आप जो भी ट्रेडिंग सिस्टम यूज करते हैं, जो भी ट्रेडिंग सेटअप यूज करते हैं, उसके साथ में यूज करिए। डू नॉट जस्ट बाय बिकॉज इट टेकन सपोर्ट एट 61.8%, दैट्स अ पुअर वे टू डू इट। नो, मेक इट रिच and use it as a supportive tool. So we will talk more about the uses part and the advanced techniques of using Fibonacci retracements in the part 2. आपने इस वीडियो से क्या कुछ सीखा है? Please make a note of it, comment below, and I will catch you in the part 2. Yeah, I Kirti Agrawal support you and wish you abundance of trading success. Bye bye, take care.